by virtue of which they do not need to hire that expertise locally. So they can focus on what they're good at. एक फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें, उनकी मैनेजमेंट को मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करनी आती है. आईटी, अकाउंटिंग, ऑडिट, पेरोल, ये वाले हेडेक्स हम लोग संभाल लेते हैं. इसमें आप देख रहे होंगे आईटी आउटसोर्सिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, ऑफ-साइट सपोर्ट, हेल्प डेस्क, कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, एंड देन देयर इज ऑन-साइट सपोर्ट, जहां पे हमारे फिजिकली लोग जाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दे टेक ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देन उनको डिपार्टमेंट्स इंटरनली हायर करने की जरूरत नहीं होती. ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज में अगेन द कंपनी दैट आई वर्क फॉर EXD is engaged with multiple clients. हमें लोग engage करते हैं for technology selection, for what kind of ERP they should buy, what will their total cost of ownership of any major investment in IT be. IT strategy के ऊपर हम लोग काफी काम करते हैं. Financial services institutions हैं जहाँ पे हम लोग Allied Bank, NCB है, इनके साथ हम लोगों ने engage होके IT strategy के ऊपर बात की हुई है. इनको IT strategies बना कर देंगे. This is just a very brief screen. I hope everybody can see the screen. This is a very brief snapshot of where EXD's offices currently are. पाकिस्तान में हम लाहौर और कराची में हैं. हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है. फिर हमारा US में 2 ऑफिसेस हैं, one in Denver, one in Las Vegas, और मिडल ईस्ट में फिर हमारे ऑफिस दुबई, रियाद और कतर में हैं. By the end of 2018, we hopefully aim to be in Toronto, Melbourne, and Kuala Lumpur. Very quickly skipping to a few of our, this is a very brief list of some of the customers that I am personally engaged with. इसके अंदर पाकिस्तान के कुछ बड़े नाम हैं. Any company that most of us as accountants or in different roles, हम finance personnel, accountants, payroll people, जो भी हमारी specifics हैं of expertise, उनके अंदर जिन companies में हम employ होने का सोच सकते हैं, वो SAP या कोई भी Tier 1 ERP यूज करते हैं जनरली. इसके अंदर PSO का नाम है, स्टाइल इलेक्ट्रिक का नाम है, इंग्रो का नाम है, निशात जूनियर, लम्स, पैकेजेस, the works. If anybody is interested in getting a more detailed list of what this is, एक snapshot अगली slide पे है, and if you want a more detailed list, you can contact me later. तो उसके अंदर आपको SAP जहाँ deployed है और जहाँ EXD उनके साथ engaged है, वहाँ पे you can get a list. This is just a snapshot of the organizations that we are partnered with. जो पहला top left पे है, that is a huge honor for any Pakistani company, which says that EXD is an SAP Platinum partner. Alhamdulillah, we have the sole honor of being the only Platinum partner of SAP from Pakistan. पाकिस्तानी कोई भी और कंपनी आज तक प्लैटिनम पार्टनर नहीं बन सकी. दुनिया में प्लैटिनम पार्टनरशिप्स जो विच इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पार्टनरशिप फॉर SAP, ये बहुत गिनती के होते हैं, डबल डिजिट्स में होते हैं, 10-12 ही हैं ग्लोबली. देन वी आर आल्सो गोल्ड पार्टनर्स ऑफ Oracle. That means we do SAP and Oracle, and we're authorized by both companies to deliver and give services locally as well as internationally. Then what's shouldn't come as a surprise, we are gold partners of ACCA as well. We are an approved learning partner. This basically means, अगर इसकी मैं तशरीह करूं, तो this basically means कि any ACCA working for EXD will complete their PER, can complete their जो articles जिनको हम कहते हैं, वो EXD में रहते हुए हम पूरे कर सकते हैं, because ACCA approves EXD as a learning partner. To be honest, I may have started my career with KPMG, but मेरे articles जो थे वो EXD के अंदर ही पूरे हुए हैं, so I can vouch for this for you guys. Just another screen, again, very salesy slides up till now. I promised you I will get over with this very soon. Just a couple of companies, a few companies that we've partnered with. इसमें IT relevant बहुत सारी चीजें हैं, इसमें hardware के बहुत सारे companies हैं, Dell है, VMware है, Xtuple है, Huawei है, DDware है, IBM है, Cisco है, and then there's obviously the ERP side of things as well, जिसमें Oracle, SAP, Salesforce, Retail Pro, ये सारी चीजें आ जाती हैं. Before we get on to what is ERP, अगर कोई सवालात हैं तो मैं अभी एड्रेस कर दूं. The first thing I see is what is different between Oracle and SAP. I worked and used SAP when I was in GL department. All right, Adil साहब, दोनों different solutions हैं, मकसद एक ही है. अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बोलूं तो दोनों गाड़ियां हैं, एक होंडा है और एक टोयोटा है. टोयोटा जो है वो शायद उन एरियाज में बहुत अच्छा चलता है जहाँ पे सड़कों पे
इतनी अच्छी खादमे आला साहब अभी तक वहाँ पे ना पहुंचे हों और वहाँ पे सड़कों पे थोड़े खड्डे शड्डे हों, और होंडा इज अ मोर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल कार, सिविक शिविक वो लोग लेते हैं. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. दोनों का पर्पस एक है, दोनों ERP सॉल्यूशंस हैं, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों का स्किल सेट, दोनों की लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज और इंडस्ट्री फिट, किस तरह की इंडस्ट्री में कौन सा सॉल्यूशन बेहतर चलता है, वो दोनों की वेरी करता है. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. उसके बाद, इन अ कंपनी होम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम वीविंग टू एक्सपोर्ट, व्हिच प्रोडक्ट विल यू प्रेफर, SAP or Oracle? I believe since you've left, I shouldn't waste time there. If you join again, do let us know. मैं दोबारा कर लेता हूँ. Presented name and email address, please. ये end पे आपको मिल जाएगा if you want to wait that long. There are some technical issues that are interrupting his voice. I hope ACCA can address that. How we get training from your organization, Tawqir Saab, towards the end of this webinar, that is exactly what I will get for. How different SAP B1 and SAP A1? Sir, एक मेहरान है, दूसरी Mercedes है, लेकिन दोनों गाड़ियाँ दोनों चलती हैं. Which is more recognized, beneficial in Canada, SAP or Oracle? Sir, if you can please contact me. अलहदा से, I will be more than glad to help you out with that. Is it already customized, or we can further add features as per requirements? You can customize it as much as you want, however, it is never recommended. What is the difference between QuickBook, Oracle and SAP? इसके ऊपर मैं आपको, जब हम लोग tiers of ERPs के ऊपर बात करेंगे, तो इसके ऊपर मैं मजीद आपको information देता हूँ. QuickBooks is a tier 3 ERP, Oracle and SAP are a tier 1 ERP, थोड़ा बेहतर है. Would you also briefly cover ERP solution of Microsoft AX and which industry is best for each solution? इसको भी हम थोड़ा बाद में देखते हैं. Anything Usman sir, thank you. Anything specific to what I have just given you about the company profile? उसके ऊपर शुरू करते हैं, तो then we can, ये सारे सवाल आपके जवाब हम बाद में करेंगे. अच्छा, उस्मान साहब, B1 और A1 के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो उसमें B1 is a tier 2 ERP, so that is a little limited in functionality. बड़ी organizations generally A1 पे जाते हैं. इसके ऊपर मैं मजीद डिटेल में भी बात करता हूँ. ट्रेनिंग कॉस्ट के ऊपर I have my colleague from the education wing here. इनके भी contact details towards the end of this presentation में share करता हूँ. आप इनसे कॉस्ट की बात कर सकते हैं. Distance learning offered by EXT, absolutely, Usman sahab. The technical issue with sound, I believe not everybody is facing this issue. So if you can just recheck your own internet connection once more. अगर issue आता है तो फिर दोबारा please बताइएगा. Light on how to transfer data from non-ERP accounting software to ERP financial. Ali Beg sahab, it's a very pertinent question, but इसके ऊपर we can have a separate session. I will be sharing my contact details. End पे आप मुझसे अगर अलहदा से राब्ता करेंगे, तो I hope I'll be able to help out. ठीक है. All right. Are there any software for medium-sized audit firms to perform audit tasks? Absolutely. There are a bunch of solutions in the market. आप अलहदा से बात कीजिए. I'm going to lodge any. Ali Beg sahab, I will be more than glad to help you out here. How much is the difference between Oracle in terms of implementation cost? Yasir sahab, that is not the premise of this webinar. I will be more than happy to answer that, but on a separate forum. Acha, so quickly going on to what an ERP is. I am sure we have a very learned audience here today. लेकिन just going through the basics of breaking down what an ERP is. Firstly, पहला component, ERP stands for Enterprise Resource Planning. Enterprise क्या होती है? किताबी definition क्या है? एक enterprise वो होती है जहाँ पे कोई भी लेन देन का मामला तय किया जा रहा हो, कोई भी खरीदो फरोख्त हो रही हो. Anywhere that is where a transaction is taking place is an ERP. जहाँ पे किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज खरीद के किसी तरह से भी satisfaction मिलती है जिसके लिए वो पे कर रहा है, that again is an enterprise. It could be a shop, it could be a factory, it could be a product, and where there are resources available to fulfill people's needs. Resources, ये हम लोग marketing वगैरह में पढ़ते हैं. It's the 4 M's which are resources, जिसमें money, men, machines and materials हो. तो enterprise एक दुकान, एक जगह जहाँ पे ये 4 चीजों की, which brings me to the third word, planning की जा रही हो, वो उसको ERP solution कहते हैं. So planning would be where enterprises can improve their profitability by improving the utilization of their resources through better planning and optimization.
I will very quickly skim through why organization offer ERPs and then come to employability on within ERP domains. ERP लोग इसलिए prefer करते हैं, businesses अब global scale पे operate करते हैं, it's become very competitive, so people prefer having a solution using technology to help them gauge why or how to operate better. So इसमें business processes, different departments आपस में integrate हो जाते हैं. अगर ग्लोबल स्केल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, जैसा नेस्ले है, कोका कोला है, पेप्सी है, you know, bigger brand names, any large brand name that we think of that we would wish to use, wear or buy, ये लोग ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस इनकी ब्रांचेस से फर्क होता है, अलग होता है, तो वहां पे इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि अगर मैं जर्मनी में बैठ के मैं अपने हेड ऑफिस में कोई भी रिपोर्टिंग लेना चाहता हूं तो मेरा लाहौर ऑफिस उस डेटा को जैसे ही इनपुट करे मुझे सीमलेसली वहां पे मिल जाया करे. एंड देन ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिस्टम्स, चाहे मैं लाहौर में काम कर रहा हूं, चाहे मैं खारिया में कर रहा हूं, चाहे मैं चूनिया में कर रहा हूं, मेरी तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक ही तरीके से ऑपरेट करें. तो जो ऑडिट या अकाउंटिंग फंक्शन है जिसके अंदर कंट्रोल्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. For an accountant, it is essential to make sure that different steps are being done in the same way across different locations. ये ना हो कि bookkeeping एक तरफ किसी तरह से हो रही है और दूसरी तरफ किसी और तरह से हो रही है. That is what ERP solutions help with. And then there is a single version of truth कि अगर inventory वाला auditor अगर किसी भी organization में जाए और वो inventory वाले से balances मांगे और वो you know GL वाले से उसी inventory के balances मांगे तो फर्क ना आए. इसलिए ERP single version of truth पे based होती है. Very quickly, I'll go through this list. If there's anything in particular that you want me to spend more time on, please point it out. ERP Solutions, different organizations के लिए, again from an accounting or audit perspective, material shortages avoid करता है. आप in a finance role, आप planning में aid करते हैं, आप budgeting करवाते हैं, आप material requisition planning करते हैं. तो ये एक अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड होता है कि वो ऐसी प्लानिंग करे कि प्रोक्योरमेंट में खलल ना आए, जो भी लीड टाइम्स हैं वो मैं एडवांस बताऊं. तो ये ERP सॉल्यूशंस उन लीड टाइम्स, उन मिनिमम स्टॉक वैल्यूज और क्वांटिटीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहली चीज करता है, व्हिच इज अवॉइडिंग मटेरियल शॉर्टेजेस. दूसरा, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट्स कैसे होती हैं. एक ERP सिस्टम आपको प्लानिंग करने में ज्यादा मदद करता है. जहां पे अगर आप फॉर इंस्टेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पे मेक टू ऑर्डर है, तो आप ऑर्डर लेने पे से लेके उस ऑर्डर की फुलफिलमेंट तक आपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है ताकि आपका टाइम टू वैल्यू टू योर कस्टमर मिनिमम रहे. तो उसके लिए ERP आपको सपोर्ट करता है. ये मजीद क्वालिटी के साथ साथ ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड इसलिए करता है क्योंकि इन सिस्टम्स के अंदर इनबिल्ट वर्क फ्लोज होते हैं. तो एट एनी गिवन स्टेज ड्यूरिंग द ऑपरेशंस आपने एक वाउचर एंटर किया, उसकी गलती पकड़ने के लिए सिस्टम के थ्रू वर्कफ्लो जनरेट होता है, जहां पे सारे लोगों के सुपीरियर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स आपको रिपोर्ट करते हैं. वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आता है जिसके अंदर आप उसकी गलतियां पोस्ट होने से पहले सिस्टम में करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद प्रोसेस इंटीग्रेशन होती है. पीपल हु करंटली एंगेज्ड विद ऑर्गेनाइजेशंस, जहां इन व्हाटएवर रोल, एक प्रोक्योर टू पे साइकिल होता है जिसके अंदर सबसे पहले एक रिक्विजिशन रेज होती है फ्रॉम द रेलेवेंट डिपार्टमेंट. एक फॉर इंस्टेंस आपके एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने कहा मुझे पेन्स चाहिए, उन्हें पेन्स की स्पेसिफिकेशन बताई, तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को चला गया. नाउ इफ देयर इज नो ERP इन प्लेस, ये चीज मैनुअली जाती है, गेट्स लॉस्ट एज अ पेपर ट्रेल, उसकी गुम हो जाती है, अप्रूवल साइकिल मुश्किल होते हैं. सिस्टम्स के थ्रू PR ऑटोमेटिकली प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास चली जाती है जहां पे वो उसके ऊपर परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं. परचेज ऑर्डर निकलने के बाद जब इन्वेंट्री सिस्टम में आती है, आपका सप्लायर आपको डिलीवरी देता है, तो वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास जाती है. वो PO से रेफरेंस लेना होता है उन्होंने, तो वहां पे आपकी गुड्स रिसीट होती है. गुड्स रिसीट होने की कॉन्फर्मेशन मिलने पे एक तीसरे डिपार्टमेंट ने, वो चौथे डिपार्टमेंट ने, व्हिच इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने इनवॉइस प्रोसेस करके पेमेंट करनी होती है. तो अकाउंट्स पेएबल एंड आपकी बुक कीपिंग डिपार्टमेंट ये भी इन्वॉल्व होते हैं. So any ERP will ensure that all these processes are seamlessly integrated to ensure, मैं कुछ आहिस्ता बोलूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा साउंड का. Alright. So any ERP will ensure that any tier 1 ERP will ensure that all these processes are seamlessly integrated.
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके आपस में बात कर सकते हैं, साइलोज में काम नहीं करते। जो इन्वेंट्री वाले लोग हैं वो प्रोक्योरमेंट वालों से उनके सिस्टम्स शेयर्ड होते हैं टू अ सर्टेन डिग्री। वो फॉर इंस्टेंस प्रोक्योरमेंट वाले के पास अगर रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे, अगेन कैरिंग ऑन द एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी, अगर उसके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि स्टेशनरी प्रोवाइड करनी मैंने किसी डिपार्टमेंट में, तो दे विल फर्स्ट चेक with the warehouse people whether such stationery is already available in inventory or not. So all they have to do is log into a system and check it through the system. तो वो कॉमन डेटा शेयर किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट का अगर कोई फंक्शन है तो वो फाइनेंस के साथ साथ प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, पेरोल, इन सब के सिस्टम्स को एक्सेस करके, क्योंकि ये एक ही सिस्टम है, इन सब के डेटा को एक्सेस करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। Real-time information is very very important for people in accountants roles because accountant के पास information end पे आती है। किसी और की कोई एक्शन लेने से accountant के सिस्टम में, GL में, सब लेजर में एक डेटा पोस्ट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर गुड्स रिसीट हो रही है सिस्टम में तो इन्वेंट्री के बैलेंसेस डेबिट होने चाहिए। नाउ अकाउंटेंट को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत जरूर है, लेकिन अकाउंटेंट इस इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अगर जीआरएन आज हुई और उसकी मैनुअल पेपर वर्क मुझ तक परसों पहुंचा तो तब तक मेरी बुक्स जो हैं वो गलत बैलेंसेस शो कर रही होंगी। सो रियल टाइम इंफॉर्मेशन इज व्हाट इनेबल्स अस टू डू दैट। मैं जब टीयर 1 ईआरपीस की या ओवरऑल ईआरपीस की बात करता हूं तो क्योंकि इनके इंडस्ट्री फिट सॉल्यूशंस बने होते हैं, ये हम लोगों को इनेबल कर सकते हैं विद इन आवर एम्प्लॉयमेंट्स। जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इनेबल करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक स्टार्टअप में अगर लोकली कहीं काम कर रहा हूं तो वहां पे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडक्ट करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि मैं एक ईआरपी जब लगाऊंगा तो वो मुझे इम्प्लीमेंटर बताएगा कि ग्लोबली आप ही की इंडस्ट्री में फलानी कंपनी ये काम इस तरह कर रही है जिसकी वजह से उनको इतनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिली है, और उसकी बेस पे अगर आपको ये लगता है रेलेवेंट है तो ये आप भी काम कर सकते हैं। बेस्ट उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग टाइम, बिकॉज दीज आर वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, तो आपकी डेटा प्रोसेसिंग का टाइम जल्दी हो जाता है। तो मंथ एंड क्लोजिंग्स, आपके स्टॉक काउंट्स, आपकी फिजिकल इन्वेंट्री चेक्स, आपके वर्कफ्लोज, आपके ऑडिट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, which enables you to do your actual work as opposed to just spending your time doing paperwork. Same thing with efficiency. Cost reduction इसलिए होती हैं, ये generally this is a very hard ROI to evaluate. This is cost reduction is a very difficult ROI gauge to is a very difficult metric to gauge कि आपकी किस तरह हुई है. However, in most cases, as an implementer, as a consultant, what I've seen in most of my clients' cases, होता यह है कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो पेपर वर्क में कहीं कैप्चर ही नहीं हो रही होती। जब एक सिस्टम इन प्लेस आ जाता है तो वो कॉस्ट जो है वो आपसे स्किप करना थ्रू द सिस्टम, चाहे वो एरर के तौर पे गलती से स्किप हो रही हो, चाहे कोई जान के उनको सिस्टम से बाहर रखना चाह रहा हो, वो चीजें मिस करना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी कॉस्ट क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाती है तो इसलिए आप उसके ऊपर काम करके उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो पीपल इन प्लानिंग रोल्स, पीपल इन बजटिंग रोल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उसके बाद डिमांड सप्लाई मिसमैच की जो कॉस्ट होती है, ये अगेन प्लानिंग की तरफ आता है, बजटिंग की तरफ आता है, ऑर्डरिंग की तरफ आता है, पीपल इन प्रोक्योरमेंट रोल्स। उसके अंदर होता यह है कि अगर आप डिमांड सप्लाई सही तरह से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे उसकी प्लानिंग, सो यू आइदर ऑर्डरिंग मोर देन यू नीड, आपने सप्लाई ज्यादा ले ली जितनी डिमांड है तो आपकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर आप trying my best. Can you speak to ACCA about this problem? We're short on time. अच्छा, डिमांड, और अगर आप अंडर प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन में अपनी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज देन यू कांट ऑब्वियसली प्रोड्यूस एज मच एज यू नीड टू इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स. Anything up till now other than the voice? We're working on fixing the sound. Please bear with us.
एक सवाल है कि जी कॉस्ट जो पेपर वर्क में कैप्चर नहीं हो रही होती सर, देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट जो ऑपरेशनली आपकी फॉर इंस्टेंस कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते टू प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उनकी एलोकेशंस कई केसेस में इनकरेक्टली हो रही होती हैं, उनको ये सिस्टम करेक्ट करता है। उसके अलावा कोई सवाल, if you can go up a bit, can interface be done between SAP and data? Of course, ये हारून हबीब साहब, दोनों के बीच में आपको मिडलवेयर, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों के आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए आप इंटरफेसेस बना सकते हैं, whether it is an RFC connector, whether it is middleware, कुछ ग्लोबली बड़े नाम हैं, गोल्डन गेट टाइप, you can explore that further if you can check online. मजीद कोई इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज feel free to contact me. Moving on very quickly to why we're speaking of SAP in particular here today, even though my experience and the company that I represent is doing equally well, we have an equally big practice of Oracle, but SAP के ऊपर आज हम specifically बात करेंगे। SAP का अपनी tagline ये है कि the best run better with SAP. So this is more on the customer side, जो SAP के customers हैं, कि जी जो organizations SAP run करती हैं वो they're above they're above. Actually, before I give as you said while explaining adopt, नहीं आखिरी बात please. As you said while explaining adopt best practices, the experience. Excuse me, sir, you have to narrate the question so they all. अच्छा, sorry, I'm my bad. As you said while I'm just repeating a question by Yasir Ali here. इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू इसलिए नहीं आता क्योंकि कोई अपना स्पेसिफिक ऐसी अगेन एंड टू एंड एनडीए साइन होते हैं, यस वी मेक श्योर कि कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू ना आए, हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करते जो क्लाइंट से अग्रीड ना हो, कोई ऐसी केसेस नहीं आगे स्टेट करते जिसके अंदर क्लाइंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो। हाउएवर, फॉर इंस्टेंस इफ अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, अ सेपरेट टेक्सटाइल में फॉर इंस्टेंस एक प्रैक्टिस अगर यूज की जा रही है तो सारे एप्टमा के मेंबर्स होते हैं, अगर 10 यूज कर रहे हैं तो 11वें को भी उसमें बताने में मसला नहीं होता। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब सेक्टर्स में कुछ प्रैक्टिसेस नोन होती हैं, वो हम लोग फिर डिस्कस करके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं टू मेक देम एक्शनेबल फॉर ईच कंपनी इंडिविजुअली। बिल्कुल डेमो दिया जा सकता है। कैन यू गिव अ लिटिल डेमो और सम नो हाउ दैट हाउ ERP and SAP does work? We can absolutely do that. If you can reach out to us towards the end of this presentation, we'll be sharing our contact details. After SAP training, will we be able to implement SAP in different companies or only we will? Achha. So there's different types of trainings that are offered. I will go over each one so that will give you a better idea whether you want to do one that makes you a consultant, an implementation consultant, or it makes you a user of SAP. SAP interface, हाफिज साहब शेयर किया जा सकता है, however it is not a part of this current webinar, so I'm sorry, you'll have to reach out to us separately. Before I move on, I would like to reiterate that the focus of this webinar is thank you Muhi sir, the focus of this webinar is to go over how knowing about an ERP solution that is used by most major companies that we would want to be employed in, how does knowing about such technologies and ERPs will make employment prospects better for us as accountants, for us as ACCA members and affiliates. Coming back to where I was, SAP की कुछ marketing slides हैं. This is how they market themselves कि जी globally हम लोग किस जगह पे हमारा footprint है. So they say 2.5 billion utility bills are processed through SAP systems per year. They manage 50 million bank accounts and they produce a total of 2.2 million tons of chocolate globally. A very brief introduction to SAP of what they are as an organization. They're in about 120 countries, so they're a completely global organization. They've spread out into 25 industries. The system is available in 37 languages. They're a reasonably huge organization. ये कुछ important slide है for ACCAs now is what kind of organizations are currently using SAP. So
I've divided this into different industries, and anything that any organization that we wish to work for, or any big brand name, from the clothes that we wear to the cars that we drive to the shampoo that we use to the beverages that we drink, ये सब most major brands across the globe use SAP, चाहे वो services में हो, चाहे वो public sector में हो. मैं अमूमन एक एग्जांपल देता हूँ मोस्टली अपने क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान में दो चीजें कभी लेट नहीं होती. एक, सरकारी हुकूमती मुलाजिम की तनख्वाह हमेशा टाइम से आ जाती है. दैट इज प्रोसेस थ्रू SAP. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द इदारा जो सारे पाकिस्तान का पेरोल रन करता है, वो SAP के थ्रू करता है. और दूसरा जो चीज कभी लेट नहीं होती वो बिजली का बिल होता है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं. कराची इलेक्ट्रिक का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो दे रनिंग SAP. बाकी जो अगर लेस्को एंड अदर्स जो हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, देयर मोस्टली रनिंग ओरेकल. पाकिस्तान स्पेसिफिक की अभी 2-3 सवाल पाकिस्तान के हवाले से आए थे. सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट स्लाइड कि मैंने पाकिस्तानी SAP कस्टमर्स का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है. सो दिस बेसिकली, इफ यू कैन गो ओवर दिस is basically a snapshot of the organizations that we would like to work for, because they're very good paymasters, they're very good organizations to work for. इसमें ऑयल एंड गैस में देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है जो सारी ऑयल एंड गैस हमारी एक्सप्लोरर प्रोड्यूस करता है. शेल, PSO, बाइको, पार्को. टेलकोज में अगर बात करते हैं तो 3 बड़े जो नाम है, PTCL, यूफोन, टेलेनॉर, ये SAP यूज करते हैं. पब्लिक सर्विसेज में हमारे जितने भी पब्लिक सर्विसेज इदारे हैं, मेजॉरिटी के इलेक्ट्रिक है, पिफ्रा है. पिफ्रा इज द ओल्ड नेम फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. एग्री बोर्ड पंजाब. फिर मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल से लेके फर्टिलाइजर तक, पेपर एंड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग से लेके जनरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग तक, ये सारे यूज करते हैं. फार्मा में इनका फुटप्रिंट है, FMCGs में इनका फुटप्रिंट है. इसके अंदर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यूजिंग SAP. आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट बिकॉज दैट ब्रिंग्स मी टू माय लेटेस्ट विन. बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में SAP का प्रोजेक्ट मैं अप्रैल में जीता हूं. अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है. होपफुली इफ यू कैन वेट बाय नवंबर, इफ यू कैन वेट टिल नवंबर, तो इसका आपको एक सक्सेसफुल टेस्ट केस भी मिल जाएगा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का. प्राइवेट सेक्टर में कई हैं जो SAP यूज कर रहे हैं. एडवांटेजेस ऑफ SAP, अगेन एज आई सेड अर्लियर, जो फायदे किसी भी ERP सोल्यूशन को सिलेक्ट करने की थी वो ही इसके एडवांटेजेस हैं कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको किसी भी पॉइंट पे एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है. हमेशा एक वर्जन ऑफ ट्रूथ होता है. कभी भी ये नहीं होता कि एक बंदा अपने डोमेन में, HR वाला पेरोल का डेटा कुछ बता रहा हो और फाइनेंस वाले के पास पेरोल में GL में कुछ और हिट हो रहा हो, इन्वेंट्री वाला कुछ बता रहा हो, सब लेजर अब फिक्स्ड एसेट्स वाला कुछ बता रहा हो, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो मेंटेन करता है उसका जो अकाउंटेंट है जो GL में पोस्ट कर रहा है उसके पास कुछ और वेरिएशन हो, ये चीजें अवॉइड होती हैं. सप्लाई चेन आपकी एंड टू एंड जो है वो सीमलेसली इंटीग्रेट होती है, फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू डिलीवरी. प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एजाज साहब, एनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी यूजिंग SAP, the few that I can name right now off the top of my mind is LUMS. There is University of Lahore. पाकिस्तान के बाहर की अगर हम बात करें तो यूरोप में a lot of universities are using them. मिडिल ईस्ट में काफी हैं जो SAP यूज कर रही हैं. Bringing us back to our slide, there is a global visibility as a business for larger organizations. इनको भी SAP यूज करने का ये फायदा होता है कि they're seamlessly integrated across all channels. People can, higher management can go through their phone and see different KPIs और उनकी reporting. Ram Ratan साहब, it is integrated to all applications running in financial institutions. Yes, आपने for instance अगर core banking से integrate करना है, आपने अपने payroll से integrate करना है, all of that can be integrated. मैं अगर examples लूँ तो पाकिस्तान में MCB Bank is one such bank that is using SAP and Oracle and a different solution for core banking. They're all connected. National Bank of Pakistan is an SAP customer. Faisal Bank is using Oracle. What is between QuickBooks, Oracle and SAP? Ziaul Islam साहब, difference between QuickBooks, Oracle and SAP primarily similarity ये है कि तीनों ERP solutions हैं. Difference ये है कि QuickBooks is not a complete ERP solution. It is a bookkeeping software
जो लोकली रन होता है, और Oracle और SAP कंप्लीट एंड टू एंड डोमेन्स मैनेज करते हैं। उसकी डिटेल्स के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में ही आने वाला हूँ। कॉस्टिंग के ऊपर शहबाज साहब, हाउ मच अप्रोक्सीमेटली SAP will cost for the group of 30 companies in Dubai? Do you provide services in UAE? Yes, we do provide services in UAE. Cost I can share with you if you can reach out to me separately. इधर bookmark कर देना चाहिए था email address. All right, for finance people, financial reporting और आपके internal controls from an audit perspective, ये सारा कुछ SAP और Oracle दोनों seamlessly करते हैं, in the sense that anything that has any financial implication within any organization gets booked somewhere in the system and then you can look it up. चाहे आप अपने सिस्टम से एक रिपोर्ट जनरेट करें, अपने लैपटॉप से करें, अपने टैबलेट से करें, अपने फोन से करें, on the go now with 3G and 4G we can enable such report. Sorry, पानी है please. All right. Next topic is employability in ERP, which I believe is a major component. Thank you so much. Of our presentation. I believe we will be going a little over time. I am sorry for that, but do bear with me because we've just gotten to the actual reason why we're here. Employability से पहले अगर कुछ सवाल लोगों के हों, other than, देखिए, I am not here माजरत के साथ as somebody selling SAP. Maybe my job, yes, is to sell SAP and Oracle and make sure that वो companies खरीदें. However, I am here as an ACCA. I want to help my peers get better know-how of how we can all make better use of knowing about SAP or Oracle or any other ERP जो हमें अपनी current jobs में help करे, अगर वहाँ पे already कोई इस तरह का ERP चल रहा है, या हमें मजीद कोई बेहतर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स लैंड करने में हेल्प करें। एक सवाल आ रहा था, कोडिंग बैकग्राउंड की नो हाउ होना कितना जरूरी है फॉर somebody who would want to become an SAP or Oracle implementation consultant. For people like us, for people with finance and accounting backgrounds, कोडिंग की नो हाउ होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे सीधी बात है, I couldn't tell an if query from a what else query. However, as an implementer, हमने जाके कंपनीज के बोर्ड्स के साथ बैठ के, अगर मैं फाइनेंस स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं फाइनेंस में लोगों से, CFO से जाके, या मैं GL के हेड से जाके, या मैं APAR के हेड से जाके उनकी जुबान में मुझे बात करनी पड़ेगी. So for it is very important for ACCAs, it is a huge plus to become SAP or Oracle certified consultants because we can talk to them on their level. अगर वो मुझसे बुक कीपिंग की बात करता है, डबल एंट्री की बात करता है, डेप्रिसिएशन की बात करता है, तो एक IT वाले को, एक कोडर को, प्रोग्रामर को इन चीजों का नहीं पता होता. So that is where an ACCA can add value, and that is what makes us more sought after by recruitment agencies and by employers. Any plan to hold SAP or Oracle training sessions in Faisalabad? I believe we're already doing so. उसके अलावा manufacturing or अगर weaving to export, which product will you prefer, SAP or Oracle? We'll have to look into the details, sir. Manufacturing में generally SAP is preferred because इनकी product costing is more stable and secure. However, in some cases हमारे पास locally पाकिस्तान में बहुत से examples हैं. हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे examples हैं जहाँ पे textile में Oracle भी चल रहा होगा. All right, employability in ERP. Now, by this particular heading, what I mean is कि ERP के know-how से हम अपनी current jobs में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, हमारा skill set किस तरह improve होता है, या हम in our existing job or profession as accountants or finance professionals, हम इस additional skill set को कैसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं. अब उसके अंदर दो ऑप्शंस हैं. एक तरीका ये होता है जो कुछ लोग, मेरी तरह के कुछ लोगों ने किया हुआ, कि मैंने अपना अकाउंट्स और फाइनेंस बैकग्राउंड को यूज करते हुए मैंने अपना प्रोफेशन
from being an auditor or being a finance professional, मैंने shift कर लिया to ERP consultancy, जिसके अंदर मैं लोगों के ऑफिसेस, क्लाइंट्स के लोगों के पास जाके ऑडिट नहीं करता था, मैं उनको ERP लगा के देता था। एंड अगेन इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स एन एंटायर टीम। जैसा मैं फाइनेंस का डोमेन देखता हूँ, वैसे ही कुछ सप्लाई चेन के होते हैं, कुछ HR के होते हैं, कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह के होते हैं। दिस मेंटेनेंस इज अ होस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग रोल में ही, यू डू नॉट स्विच योर प्रोफेशन, यू रिमेन एन अकाउंटेंट, यू रिमेन अ फाइनेंस प्रोफेशनल, yet you enable yourself to become more hands-on on how to use these leading ERP solutions like SAP and Oracle. What will that enable you to do? That will enable you to position yourselves at leading employers जहां पे SAP और Oracle चल रहा है. So you can, your CV will have one additional line item better than the other guy जिसको अभी SAP और Oracle सीखना है, क्योंकि वो अब जो भी एम्प्लॉयर है ये चीजें ये देखते हैं। I'm looking at myself. ये चीजें देखी जाती हैं। I've been engaged with multiple clients in multiple roles, multiple advisory roles, जहाँ पे HR और रिक्रूटमेंट वाले ये चीज जरूर देखते हैं कि अगर मैं एक ऐसे बंदे को हायर करता हूँ जिसको हमारी ERP जो लगी हुई है, हमारे ऑफिस में हमारे सिस्टम जो लगे हुए हैं, अगर वो उसको नहीं आती तो पहले 3 महीने मुझे उसके ओरिएंटेशन के बाद उसको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी to bring him up to par to actually work here. And somebody who already has that training, somebody who already knows how SAP or Oracle or any of these ERPs work, will already have an edge. So the company, your employer, will save 3 months of your salary that they will not need to invest. You can be of use to them right away. इन दोनों ऑप्शंस को रियलाइजेबल बनाने के लिए स्किल्स किस तरह डेवलप किए जाते हैं इज व्हाट इज स्पेसिफाइड ऑन माय स्क्रीन। एक चीज होती है एजुकेशन। What you can do is you can enroll yourself in a certified SAP consultancy training that is offered by both SAP and Oracle. SAP की अपनी trainings होती हैं, Oracle की अपनी trainings होती हैं। You can enroll yourself in those, उनकी अपनी fee होती है, different modes of delivery होते हैं, जिसके अंदर आपको for instance online lab भी मिल जाती है for practicing, आपको एक इंस्ट्रक्टर लेड की ऑप्शन भी होती है, बट दे हैव अ सेपरेट सेट ऑफ वेरी इफ आई मे से सो एक्सपेंसिव फीस। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑलरेडी किसी जगह पे इंगेज्ड हैं, आप ऑलरेडी किसी जगह पे एम्प्लॉयड हैं जहां पे इनमें से कोई ERP चल रही है, कोई इस्तेमाल की जा रही है, तो आप इस्तेमाल कर करके एक्सपीरियंस बन जाएगा आपका। और तीसरी चीज होती है SAP की यूसेज की ट्रेनिंग। Now the first thing which was education and the third thing which is training, इनमें फर्क ये है कि हम education उसको कहते हैं that enables you to become an SAP implementation consultant. तो आपको front end usage as well as back end configuration भी पता चल जाती है, but that is if you want to get into that level of detail. Trainings जो end user trainings होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि आपको ये systems इस्तेमाल करने आए, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो ऑन टेस्ट एंड डमी सिस्टम्स, कि आपको एक इंस्ट्रक्टर ये चीजें सिखा रहा हो कि किस किस सिनेरियो में कौन कौन सा प्रोसेस SAP की स्क्रीन के अंदर लॉग इन करके या Oracle की स्क्रीन के अंदर लॉग इन करके दिखाए कि क्या क्या चीज किस तरह प्रोसेस की जाती है। दैट इनेबल्स यू टू रन एन SAP सिस्टम, नॉट डेवलप वन, नॉट सेट वन अप। इसमें अगेन ट्रेनिंग्स के 3 तरीके होते हैं। एक ERP के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं, उसमें से कुछ सर्टिफाइड होते हैं, कुछ नहीं होते। I would always recommend all my peers to go for a training that is recognized by each of these organizations, जिसके ऊपर किसी global organization या authority, be it SAP, be it Oracle, be it ACCA की authorization जरूर हो। इसके अंदर ऑनलाइन कोर्सेज सिर्फ ऑथराइज वाले अवेलेबल हैं, अनऑथराइज वाले भी अवेलेबल हैं, बट फील फ्री टू लुक इनटू दैट। एक ERP सर्टिफाइड एकेडमी होती है जिसके अंदर आपको ऑथराइज्ड पार्टनर एक्सेस देता है। यू एनरोल इनटू अ प्रोग्राम जहां पे आपको कुछ अरसे के लिए सिस्टम पे एक्सेस दिया जाता है इनके ट्रेनिंग कंटेंट का। सो यू नीड टू स्टडी योरसेल्फ, देयर इज नो ट्रेनर अवेलेबल टू एक्सप्लेन ऑल दैट दिस न्यू डायमेंशन टू यू,
कि ये दुनिया है क्या, तो वो आपने सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं विच इज द एकेडमी। और तीसरी चीज होती है एंड यूजर ट्रेनिंग्स, जो मैंने शुरू में कहा कि आपको सिस्टम यूज करने के लिए जो इनेबल करता है, वो एंड यूजर ट्रेनिंग्स EXT and ACCA have collaborated and designed specifically for ACCA students. So people like myself and very, very learned people from ACCA have put their heads down together, and based on what ACCAs learned through their studies and the types of experience that they have post ACCA, उसकी बेसिस पे हमने इस ट्रेनिंग को स्केड्यूल किया है, स्ट्रक्चर किया है to enable faster learning for running an existing ERP system. ये SAP के लिए भी available है और ये Oracle के लिए भी available है from a finance perspective. End user trainings किस तरह operate करती हैं? The ones that we've designed. Firstly, I would like to clarify that this is an entry level course. This will put you on the first pedestal that you need to be on to enable your journey to learning about each of these ERPs. आप ERP पहले इस्तेमाल करना सीखते हैं और फिर उसके पीछे वाली चीजें समझते हैं कि बनता किस तरह है, डिप्लॉय किस तरह होता है, चलाया किस तरह जाता है. This is what will only enable you to run an existing setup ERP solution, be it SAP or Oracle. Now, these trainings are set out as classrooms. हर classroom में there's a group of candidates that are sitting there, and there's a certified instructor who is giving you, imparting this training on you. It is spread over 8 weeks, 48 hours में हमने इसको divide किया हुआ है, जहाँ पे आप every week you have one intensive session spanning over half the day, if I'm not wrong, that gives you each domain की knowledge. उसके ऊपर क्या क्या चीजें उसके अंदर included होती हैं, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा. इसके अंदर मजीद ये भी सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती कि जी अगर आप प्रोक्योर टू पे कर रहे होंगे तो क्या होगा. विद इन प्रोक्योर टू पे और ऑर्डर टू कैश साइकिल जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं, जो फंक्शनैलिटी सिस्टम आपको इनेबल करता है, जो एनीबडी इन एन अकाउंट्स रोल और अ फाइनेंस रोल और अ बजटिंग रोल और अ प्लानिंग रोल, जिनको ये चीजें पता होनी चाहिए, वो हम एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं. इसके बाद हम लोग अगला स्टेप ये है कि हम लोग इन कोर्सेज की कंटेंट्स पे या SAP स्पेसिफिकली के अंदर फाइनेंशियल्स डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. बिफोर वी गेट इनटू दैट, कैन वी आंसर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस? साथ साथ कर रहे हैं, चलें. आई एम ग्लैड. एनीथिंग दैट आई नीड टू आंसर स्पेसिफिकली? Yeah, there are certain questions. I mean, these questions are all, I mean, the replies are sent to people who are asking. I mean, the wider audience would not know what question was asked and what was the answer. Acha, so I need to repeat the questions as well? Some of them and read them out, and you could give a reply as well. Acha, an affiliate without finance experience can enroll in SAP training. Gulshed Raj sahab, an affiliate without finance experience and can enroll in SAP training? Absolutely yes. ये जो ट्रेनिंग जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, if you are an active ACCA, irrespective of your experience, you can enroll in this program. Ali Nakis Saab mentioned, can we use ERP without training with the help of our finance background? Absolutely, sir. Fee of the training, I believe my colleague here will be, I have my colleague here, Ms. Sarah Khan, inki contact details are at the end of this presentation. She will be able to give you a better insight on how the fee structure of this is done. I myself am the Mazdoor who's only responsible for the execution. So if you can reach out to her separately. I think if you can explicitly, I mean, Ali Naksh has asked another question. He says, is it easy to use? So what he's saying is, if I'm, let's suppose, just a finance professional, right, and I haven't received any training in how to operate an ERP, right, can I still easily do it? Okay, so yes, that's a very good question, and it doesn't have a straight answer, to be honest, because being easy to use is a subjective term. Something that could be easy for me something that could be difficult for me could be very, very easy for you. However, it is generally considered not the easiest of solutions. You should have adequate training and expertise to be able to use a certain ERP solution because of the risks involved. इनके अंदर internal controls होते हैं that make sure prevent certain levels of mistakes.
However, it is always better to have hands-on know-how of how it is to be operated before you actually get into the live system. They want slides. Yes, we can email the slides afterwards. Yes, so anybody who wants the slides that I'm presenting, we will be sharing these with you separately after the webinar. When will the next SAP session will be conducted in Islamabad? If you can, Gulshazad sir, if you can email us separately, we'll be able to inform you of our schedule in Islamabad. We're currently already doing these sessions in Peshawar, Lahore, Islamabad and Karachi, and within the next 2 months we'll be starting in Multan and Faisalabad. And in each of these cities that I've just mentioned, once one session ends, soon after we launch another one. So if you've missed the current one, you can always enroll in the next one. Hi, do you people have any plan to hold SAP or Oracle training sessions in Faisalabad? I think I just answered that. We'll be starting in 2 months in Faisalabad. Is there any international SAP certifications like Oracle Certified Professionals? Absolutely. Once you do the SAP E-Academy or enroll into the SAP Learning Hub, you can appear for the certification exam and become a certified professional. Is it possible to implement ERP from an ACCA because they are not its specialists? Sir, I am an example sitting right here. I'm an ACCA and I've been implementing SAP for about 6 odd years now. Across training. Yes, I'll get that. Across Pakistan, across the Middle East. However, before I embarked on this journey, before I got to becoming an SAP consultant, I went through certain amounts of training, which included the end user training, which included the consultant level training. So it's a rigorous program that once you're enabled in, you can become a consultant. If that's the end of it. Moving very quickly on to the next topic, which is what basically is contained within this particular module. Before we get into this, मैं थोड़ा सा elaborate कर दूं कि क्योंकि आज हम specifically SAP की बात कर रहे हैं, SAP के अंदर different modules होते हैं. Modules सिर्फ इस basis पे अलहदा किए गए हैं क्योंकि वैसे system is seamlessly integrated, they all work together. However, different domains को modules का नाम इसलिए दिया गया है ताकि जो implementer है उसको पता हो कि कौन-कौन से skill set के लोग उन्हें जाने. For instance, एक फाइनेंस प्रोफेशनल यहाँ पे जो हेडिंग है SAP फाइनेंशियल्स एंड कंट्रोलिंग, ये तो मॉड्यूल्स की एक्सपर्टीज लेना उसके लिए आसान होगी. हाउएवर, अगर एज एन ACCA मुझे कहा जाए कि SAP के मेंटेनेंस मॉड्यूल की इंप्लीमेंटेशन की जाए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इनटू दैट. मैं उसकी ट्रेनिंग ले भी लूं तो मुझे उसके जार्गन्स नहीं पता. इन चीजों को करने के लिए जनरली इंजीनियर्स होते हैं जिनको मेंटेनेंस का पता हो, प्लांट मेंटेनेंस का पता हो कि अगर सीमेंट प्लांट है तो उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब होगी, शटडाउन मेंटेनेंस स्केड्यूल्स क्या होंगे. और इसी तरह बाकी डोमेन्स होते हैं. प्रोक्योरमेंट अलहदा होता है, इन्वेंट्री अलहदा होता है, सेल्स अलहदा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा होता है, इसके लिए सप्लाई चेन के लोग होते हैं. HR एंड पेरोल अलहदा होता है जिसके अंदर HR प्रोफेशनल्स होते हैं. What's relevant for us as accounts and finance professionals are 2 modules of SAP. One is SAP Financials, which is for financial reporting, जो हमारी external reporting के लिए यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और दूसरा कंट्रोलिंग मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारी इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और कॉस्टिंग कवर की जाती है. ये 2 डोमेन्स ऐसे हैं जो ACCAs से बहुत रेलेवेंट भी हैं और इसके ऊपर गिवन द राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एक हैंड्स ऑन ग्रास्प लेना रिलेटिवली आसान है. इन्हीं लोगों की जनरली, फॉर इंस्टेंस, व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग टू सच एन ऑडियंस जैसी आज है, व्हेन आई एम डूइंग रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, what I prefer to become an SAP FI or controlling consultant, or when certain clients of mine ask me to refer aspiring users of SAP or Oracle to them, मैं तब भी जब अप्रोच करता हूँ मार्केट में तो मैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स तो देखता ही हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उनके पास रेलेवेंट ट्रेनिंग भी हो ताकि वो आउट ऑफ प्लेस ना हो. एक MBA HR को बेशक SAP FI की कुछ बेसिक नो हाउ हो, वो कभी भी जाके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम सक्सेसफुली उतना नहीं कर सकेगा जितना एक ACCA कर सकेगा. So just a very a chart of what is contained within
this structure is how it is set up. This is what defines what you need to know as a user of SAP and B an implementer of SAP कि इसके पीछे structured क्या defined है. तो सबसे पहले आपका एक क्लाइंट होता है जो सिस्टम में क्रिएट किया जाता है, जिसकी बेसिस पे आप ये इवैल्यूएट करते हैं कि मेरी डोमेन क्या है. दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ लीगल एंटिटीज, इफ आई माइट क्लैरिफाई. फॉर इंस्टेंस, जो हमने पीछे कुछ कस्टमर्स के नाम देखे थे, जो एसएपी के यूजर्स के नाम देखे थे, उसके अंदर हमारे फार्मा के ग्लोबली जितने बड़े नाम हैं, हमारे एफएमसीजी के जितने बड़े नाम हैं, नेस्ले हो गया, कोक हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, यूनिलीवर होगी, ये सारे मल्टी लीगल एंटिटी कंपनीज हैं जो दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट लीगल एंटिटीज के नाम से ऑपरेट कर रहे हैं. However, they're all joined at the top through one reporting system. तो उस लेवल पे हम क्लाइंट क्रिएट करते हैं जिसके नीचे एक चीज खुलती है कॉल्ड द कंपनी कोड. द कंपनी कोड इज योर लीगल एंटिटी. पाकिस्तान के लिए जो यूनिलीवर है उसका एक कंपनी कोड होगा, यूएई के लिए अगर यूनिलीवर है तो उसका अलग कंपनी कोड होगा, इंडिया के लिए है तो उसके लिए अलग कंपनी कोड होगा, बिकॉज सब पे लोकल टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं. एक चीज साथ में जो कंपनी कोड के पैरेलल चल रही होती है, इट इज कॉल्ड द चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज होता है. इट इज केप्ट सेपरेट टू द कंपनी कोड एंड असाइन्ड कॉन्सिक्वेंटली टू द कंपनी कोड, बिकॉज ये आपके बुक कीपिंग लेजर से अलहदा होता है. आपका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ये डिटरमिन करता है कि आपकी कितनी टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन सिस्टम में मेंटेन हो रही होंगी. एक आपकी बुक डेप्रिसिएशन होगी जो आपको इंटरनली चाहिए, एक आपकी फॉर इंस्टेंस टैक्स डेप्रिसिएशन हो सकती है जो आपको चाहिए हो सकती है, एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप इसमें सिस्टम में क्रिएट करते हैं. Chart of account, I hope most of us would be aware of what a chart of account is. This is basically what determines how your trial balance is generated from the system. ये भी आपके कंपनी कोड को असाइन होता है. तो irrespective of the legal entities, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट सिंगुलर भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, and then they get assigned to the company code. And this brings me to what I initially said कि अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में अमूमन इंफॉर्मेशन पहुंचती है as opposed to the finance person entering that data into his own system himself. प्रोक्योरमेंट की गई तो लेजर में उस प्रोक्योरमेंट का इफेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की एंट्री करने से रिफ्लेक्ट होगा. गुड्स रिसीट की तो वहां से जब वेयरहाउस वाले ने एंट्री डाली तो आपके पास लेजर में अपने जीएल में रिफ्लेक्ट होगा. सेल्स की अगर हम बात करें तो जब सेल्स वाला एक डिस्पैच बुक करेगा या डिलीवरी बुक करेगा, डिलीवरी ऑर्डर बुक करेगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट या आपकी जो इनवॉइसिंग करेगा तो रेवेन्यू का इफेक्ट आपकी बुक्स के ऊपर तब आएगा. सो द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इज रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो फ्रॉम एन ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव वी आर एट द एंड ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउएवर व्हेन वी आर सेटिंग द स्ट्रक्चर अप, तो फाइनेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले डिफाइन होता है सबसे ऊपर, और उसके नीचे बाकी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, सप्लाई चेन की, प्रोडक्शन की, कॉस्टिंग की, पेरोल की, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी अपनी जगह पे एंटर हो और फिर ऊपर आके कंसोलिडेट हो एट द सब लेजर एंड लेजर लेवल. तो इसीलिए आप यहाँ पे एरोस देख रहे हैं जो हमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे सारी सेल्स होती हैं. फिर आपकी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपकी सारी प्रोक्योरमेंट होती है, और प्लांट की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे सारी प्रोडक्शन होती है. ये एक सेक्शन हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो आपको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज करना होता है. द सेकंड थिंग इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग वो एरिया है जहां पे आप इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग किया करते हैं. मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मींस जो आपकी कॉस्टिंग होती है, आपके वेरिएंस एनालिसिस होते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल वर्सेस प्लान, आपके बजट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपकी इस डोमेन के अंदर मेंटेन की जाती हैं. This is a separate hierarchy that you need to set up in parallel to your finance hierarchy, because your financial reporting information does not always have to be similar, it does not always have to be identical to your internal management reporting, क्योंकि वहां पे आप costing एक different तरीके से करते हैं. Moving on, आपकी financial accounting और management accounting के views फर्क होते हैं. People who employed in these separate domains, आपके financial view के अंदर again as I said आपकी financial statements generate होती हैं. For instance, आपकी profit and loss statement और आपकी balance sheet जो है वो financials में create होगी. However, आपके controlling के अंदर आपकी product costing होगी, आपकी ABC होगी, आपकी variance analysis होंगे, आपके सारे budgeting यहाँ पे होगी. इसके अंदर मजीद जो ये slide depict करती है
वो ये करती है कि हाउ these two modules, in my experience what I've seen is SAP के BCO modules हैं, however not any module is as integrated with all the other domains as these two modules are, which puts more pressure on the finance professional who is taking care of financials and controlling modules within your system, because उसने इंश्योर करना है कि बाकी सारी जगहों से मेरी बातचीत होती रहे, मेरी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन फ्लो करे और मैं उसको एक्शनेबल डेटा में क्रिएट कर सकूं फॉर माय ओन प्लानिंग। क्योंकि फाइनेंस प्रोफेशनल ने ये भी इवैल्यूएट करना है कि अगर मैंने ओवर स्टॉकिंग कर ली तो मैं वर्किंग कैपिटल फंसा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी कैश को कहीं और इन्वेस्ट करके बिजनेस को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहा। So this is something that you need to evaluate as a finance person taking care or looking after these two domains within your organization जहाँ पे ERP चल रहा है। This is just a very brief snapshot of the level of depth that a tier 1 ERP gives you. At this point मैं elaborate करता हूँ कि ERP में tiers किसको कहते हैं। Generally ERP की domain में, now ERP is an entirely different setup. इसकी domain में different levels define किए गए हैं to explain कौन सी ERP की क्या functionality है और क्या stability है। So this is generally divided into 3 tiers. Tier 1 में global ERPs आती हैं जो across different platforms operate करते हैं, namely SAP and Oracle. इसमें Tier 1 establish करने के लिए कि कौन सी ERP Tier 1 में और कौन सी Tier 2 में है, कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं कि टेक्निकल स्टेबिलिटी कितनी है, स्केलेबिलिटी कितनी है, किस एक्सटेंट तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इंटीग्रेशंस कितनी है। कुछ एक सवाल मैंने पीछे नोट किया था, नेमिंग श्लम्बर्जे एंड जनरल इलेक्ट्रिक, इनकी ERPs की भी बात की जा रही थी। Now how those two are different to SAP and Oracle, even though both of them technically fall under Tier 1 ERPs, is that SAP and Oracle created ERPs as supply chain solutions for each different industry vertical globally. Schlumberger ने क्या किया, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी थी, वो ऑयल रिग्स मेंटेन करनी थी, उन्होंने अपनी ERP खुद इस्तेमाल करने के लिए बनाई और फिर उन्होंने हिसाब लगाया यार ये तो बहुत अच्छी बन गई, इसको बेचा भी जा सकता है। So their IT department also became a profit center. So that Schlumberger as an ERP is not is not usable in different industries. आप Schlumberger का प्रोडक्ट कभी भी एजुकेशन सेक्टर में नहीं देखोगे, कभी भी आप टेक्सटाइल सेक्टर में नहीं देखोगे, कभी भी रिटेल सेक्टर में नहीं देखोगे, वो अपनी इंडस्ट्री वर्टिकल्स के लिए बना रहा है। यही इसी तरह GE का भी है, हालांकि टेक्निकली दोनों Tier 1 है, लेकिन इनकी क्योंकि they were built for very specific requirements for very specific industries, मैं एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से उनके ऊपर ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो कम ऑर्गेनाइजेशंस में लगे हुए हैं, और क्योंकि वो कम ऑर्गेनाइजेशंस में लगे हुए हैं, हमारी अगर हम Schlumberger में अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लें तो एम्प्लॉयर्स की लिमिटेशन है। फॉर इंस्टेंस अगर SAP के ग्लोबली एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 100 कस्टमर्स हैं, Schlumberger के शायद 7 होंगे, अब वो 7 बड़े खुश होंगे एज अ सोल्यूशन Schlumberger से, लेकिन हमने एज एन ACCA क्या इवैल्यूएट करना है कि अगर हमने ये ट्रेनिंग्स लेनी है फ्रॉम जॉब बेटरमेंट पर्सपेक्टिव, तो हम क्या वो वाला सोल्यूशन करना चाहिए हमें जिसके एम्प्लॉयर्स प्रोस्पेक्टिवली ज्यादा हो सकते हैं, या वो वाला करना चाहिए जिसके रिलेटिवली कम। मूविंग ऑन फ्रॉम Tier 1, Tier 2 में क्या कौन से ERPs फॉलो करते हैं? SAP Business 1 का किसी ने जिक्र किया था। SAP Business 1 is a Tier 2 solution. Why? Because it was made for smaller organizations जिनके स्केल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ऑपरेशंस के, और वो बहुत वाइड भी नहीं है। इट्स एन एंट्री लेवल ERP। अब एंट्री लेवल ERP हम किसको कहते हैं? फॉर इंस्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो फैक्ट्री नहीं चलाते, वो एक जगह से सामान होलसेल में उठाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। नाउ दैट इज अ टिपिकल SAP Business 1 कस्टमर। Microsoft AIX, Microsoft Dynamics, these are Tier 2 solutions. क्यों? क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ Tier 1 ERP मिसिंग है। फॉर इंस्टेंस ability to give extensive reporting as standard। आपको ERP में सिर्फ डेटा डालना तो नहीं होता, उसका एक्चुअल ERP का फायदा ये कि आपको एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल या आपकी मैनेजमेंट को उसके ऊपर रिपोर्ट्स मिल सके। वो रिपोर्ट्स कितनी डेप्थ में और कितनी एक्सटेंसिव हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेट्रिक्स दैट डिटरमाइंस कि ERP Tier 1 है या Tier 2 है।
बिजनेस वन, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें लिमिटेड रिपोर्टिंग अवेलेबल होती है, बाकी सारी आपको कस्टमाइज करनी पड़ती है। एक बिजनेस वन का एक और एग्जांपल हो, इवन दो EXT डज SAP बिजनेस वन एज वेल। यहाँ पे एक सवाल आया था हाफिज हामिद सईद का कि आर यू वर्किंग विद SAP बिजनेस वन और SAP A1? वी आर डूइंग बोथ। अगेन एज आई सेड, वी SAP प्लैटिनम पार्टनर्स, तो हम SAP A1 भी करते हैं, हम SAP B1 भी करते हैं, हम SAP HANA भी करते हैं, हम SAP HANA एंटरप्राइज क्लाउड भी करते हैं, हम HANA क्लाउड प्लेटफॉर्म भी करते हैं जिसको ACP कहते हैं, हम SAP एनालिटिक्स भी करते हैं, हम SAP के इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्टिकल्स फॉर यूटिलिटीज, फैशन, एजुकेशन, ऑयल एंड गैस, ये सब भी करते हैं। आई कैन गो ऑन, बहुत बड़ी सोल्यूशन ऑफरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ वी प्लैटिनम पार्टनर्स वी डू ऑल। हाउएवर इन सब की रिक्वायरमेंट और इन सब की यूजेबिलिटी में फर्क है। फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, व्हाट आई बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, व्हाट आई वुड रिकमेंड टू ऑल माय पीयर्स वुड बी कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएं जिसका एक पे मास्टर अच्छा होता है, जिसकी सीवी में आपकी सीवी में लिखने से आपकी वैल्यू एडिशन रियलिस्टिक हो, B1 की इतनी नहीं होती, और दूसरा जिसको सीखने से आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज खुलते हैं। Going forward, this is just how SAP looks to somebody who's using it. ये उनकी hierarchies होती हैं on the controlling side. I don't think this is very extensive. Bringing me to my last slide, if you can see this now, इसमें मेरे contact details, my direct phone number along with my email address, ये भी आ रहा है। Along with this, मेरी जो colleague हैं, who is the head of training and education at EXT, इनकी भी details आपके यहाँ पे मिल रही हैं। Anybody who's interested in trainings for SAP and Oracle can feel free to reach out to her. Anybody who has any query, as a friend, as a peer, as a colleague, as an ACCA alumni, anybody who wants to reach out to me, please feel free to, ये मेरी details हैं। सवालात अगर हैं तो please मुझे दिखा दें, तो we can answer those and then wrap it up. How can Tawqir Hussain Saab asks how we get training from your organization? You can reach out to Sara Khan. We've got multiple modes of training, one of which is designed specifically for ACCAs. That is the entry-level course. You can always opt for that. That is a very, very good entry-level course. आप इनसे राब्ता कर लें, she I'm sure can guide you better. Any info about the intact ERP cloud software? I'm sorry, sir, I have not heard of it. Would you also briefly cover the ERP solution of Microsoft AX/365, which industry is best for each solution? All right. So इन सारी ERPs ने, या जनरली इन द सिस्टम्स इंटीग्रेटर डोमेन, आपकी जो इंडस्ट्रीज है ग्लोबली, वो 25 इंडस्ट्रीज में ग्लोबली दुनिया के हर बिजनेसेस को डिवाइड किया गया। नाउ दैट रेंज फ्रॉम एरोस्पेस टू डिफेंस टू पब्लिक सेक्टर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मैन्युफैक्चरिंग टू फैशन एंड रिटेल, जिसमें आपकी टेक्सटाइल्स आ जाते हैं, टू ऑयल एंड गैस। आई मीन आई कुड गो ऑन, 25 इन ऑल हैं। हर डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए मल्टीपल ERPs हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बैंक्स की बात करता हूँ, which is a FSI, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे Oracle भी चल सकता है, SAP भी चल सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट देयर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इज। फॉर इंस्टेंस, अगर वो मुझसे पूछें कि हमने सिर्फ अपना फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट जो है उसको ERP में लेके आना है, तो आई वुड सजेस्ट Oracle, बिकॉज Oracle की टाइम टू डिप्लॉयमेंट कम होती है और जनरली इसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो जाती है। हाउएवर, अगर वो मुझसे कहें कि मैंने HR एंड पेरोल भी कंप्लीटली करना है, तो देन आई वुड से कि इन एडिशन टू फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड HR एंड पेरोल अगर आपने करना है, तो आई वुड सजेस्ट SAP, बिकॉज वहां पे कॉस्ट की नेचर फर्क हो जाती है। हाउएवर, अगर मुझे किसी मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन का कहा जाए कि जी मैं मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं और हमें बहुत डिटेल्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग चाहिए है, जहाँ पे हमारा मल्टी लेवल प्रोडक्शन होती है और हमें ईच लेवल पे वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्टिंग चाहिए है, वहां पे मैं SAP प्रपोज करता हूं एज अ रूल, बिकॉज SAP की प्रोडक्शन कॉस्टिंग बहुत अच्छी होती है। हाउएवर, अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे उनको कंप्लीट प्रोडक्शन कॉस्टिंग नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक चाहिए कि इनपुट कितना हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकला, और इस पूरे प्रोसेस की एक ही गो में मुझे कॉस्ट मिल जाए, तो मैं SAP बिजनेस वन भी प्रपोज कर देता हूं, बिकॉज that is doable for them at that scale. I believe that brings me to the end of this webinar. I hope I have been able to divulge some insight into ERP. मजीद कोई भी सवाल हो तो please feel free to reach out to any of us, myself, Sara or ACCA.
Thank you all for your time. It has been a pleasure being here. How do I end this?